तो एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आई फेल फ्रॉम माई बाइक एंड उसके बाद लाइक आई वाज ऑपरेटेड इन एम्स ऋषिकेश। तो आई गॉट रेफरेंस ऑफ डॉक्टर श्रुति एंड आई कॉल्ड हर फॉर पोस्ट सर्जरी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैं बेड से बिल्कुल उठ भी नहीं पाता था एंड आई हैड बीन इन टेरिबल पेन एंड आई थॉट कि भाई 6 महीने से पहले तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन ड्यू टू हर पोस्ट सर्जरी एंड क्या कहते हैं ड्यू टू हर फिजियोथेरेपी सेशन दे वर अ लॉट क्वाइट हेल्पफुल। लाइक आई एक्चुअली सीन पीपल जो 4 महीने हुए हैं जिनको सर्जरी के बाद, एंड 4 महीने में दे आर barely able to walk with their walker. But after 2 months, I actually joined a gym and मैं आराम से free body squats, even cardio भी कर पा रहा था treadmill पे दौड़ के, which I couldn't believe I could do. And those sessions were a lot helpful. She did. I would damn say those sessions were extremely painful, but they were a lot helpful in the long run. So I think it was a very wise decision for me to actually call her up and came for the sessions. And a lot of people don't take physiotherapy sessions as a कि क्या एक्सरसाइज ही तो है, बट जब तुम्हारी हड्डी टूटती है तो यू आर नॉट श्योर कि कौन सी बोन को कब हिलाना है, और हल्का सा भी इंजरी क्या कहते हैं बहुत मेजर फ्रैक्चर पे क्या बहुत दिक्कत दे सकता है। सो या एंड इफ एनीवन वांट्स कि क्या कहते हैं कोई सर्जरी क्या कहते हैं आफ्टर सर्जरी दे हैव एनीथिंग लोअर ब्लैक पेन, आजकल जिम में भी काफी लोगों को दिक्कत होती है, दे कैन डू चेक इट आउट। Thank you, Manish. वेलकम।